Namaste, and good afternoon to you all. Special respects to my colleagues on the dais, the organizers of this event, sponsors, speakers, the awardees, and you all for making this event a success. Thanks for inviting me to be part of this auspicious occasion of celebrating a key ingredient of life, social harmony. Without it, we are surely nothing. Program Director, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, at the outset, let me convey greetings from the Kingdom of Lesotho. And please allow me a few minutes to briefly tell you about the Kingdom of Lesotho, also nicknamed the Kingdom in the Sky, or the Roof of Africa, or the Switzerland of Africa, because of her altitude ranging from 1,500 meters above sea level to 3,500 meters, while your lowest point here in India is 2.2 meters below sea level. Ours is 1,400 meters above sea level. I always argue that even if the oceans can drown the world, we'll be the last to be drowned. The Kingdom of Lesotho has the highest, lowest point of any country in the world, making her the highest country in the world. Lesotho is the southmost African country, landlocked by the Republic of South Africa, where both countries are interlinked with good roads, railways, and airways, and have social harmony with each other. The Kingdom of Lesotho is one of the tiny countries of the world with the land area of 30,355 square kilometers, and her population is only 2.4 million. History tells that Lesotho was never colonized, while all her neighbors then were colonized and clubbed together to form South Africa. The Basotho nation was founded in 1824 on a plateau called Thaba Bosiu, or Mountain at Night, where the Basotho people resisted to be colonized by collecting stones and putting them at the edge of the plateau and rolling them on the colonizers as they were trying to climb the plateau. But others say the plateau was growing into a big mountain at night. This is why it was called a mountain at night. This is how Basotho resisted colonization, and Lesotho ended up being an enclave of the Republic of South Africa. Lesotho boasts of its beautiful scenery, good for tourism, snow in winter for skiing, big stones of diamond, pure water, wool and mohair, high altitude, good for health, and social harmony. I always argue that if you visit Lesotho, you spend a week, your age will be reduced by a year, given the freshness of our air, 0% carbon print, and the social harmony. We are happy people, but of course you're also very happy people in India. Visit and invest in Lesotho to grow our social economy and our social harmony. Program Director, distinguished guests, ladies and gentlemen, we are blessed today to attend the conference on social harmony and economy 2023 with the theme freedom, safety, and prosperity. The theme of today's conference carries three very important ingredients: freedom,
safety, and prosperity. In today's world, people have many things to worry about: their home, their car, their job, and their financial well-being. Above all, people also worry about their freedom, safety, and prosperity. We worry about this to ensure that we are there and give the people we love and care the best of whatever we can. We work hard and battle through life's challenges to make it happen. But who is worrying about you or about us? Who is worrying about your health? Good health allows you to be the provider and protector to those you love. Without it being, we are nothing. I am starting here because it is important to have before giving. We talk about social harmony, freedom, safety, and prosperity, which you cannot give to others if you don't have. We have to start with ourselves and enjoy these things so that we can share with others. Doing things you like to do can make you feel more at peace. You will then give off a positive vibe that others around you will pick. They say charity begins at home. If we have these qualities, you'll be able to share with others. I want to thank and congratulate ISMA for organizing this event and identifying a couple of awardees who have displayed these qualities to encourage others to do the same. To the awardees, ISMA is helping us to say to you, we acknowledge you, we recognize you, we thank you for all that you do. Congratulations to all and keep it up. Continue to participate in community events. Continue to volunteer and donate. Continue to connect with your neighbors. Continue to be friendly and sociable with others. Continue to hang out with friends. Continue to spend quality time with all around you. Be vulnerable and honest with friends and family. Be generous and caring to your family. Promote peace, serve and befriend all. Give a smile and you will get it back. Remember, cooperation, trust, equity, and strong leadership can bring social harmony, which can significantly increase a community relative resilience, and this is what continues to make India incredible. I wish you all the best. Thank you so much, sir. Now I request Founder Director, Institute of Harmony and Peace Studies, Dr. M.D. Thomas, to please come forward. ISMA Times deserves to be complimented for the international service, for mass awareness, and especially for this World Conference on Social Harmony and Economy 2023. I am grateful to the organizers for having me here as well. Freedom, safety, and prosperity for all. That's the theme we are discussing today. This is oriented to do social and economic harmony. Freedom would mean self-determination in thought, word, and deed. Safety denotes security and well-being in all areas of life. Prosperity, in its turn, would imply affluence all throughout life. Prosperity for all signifies
collective welfare and happiness, always and everywhere. Freedom, safety, and prosperity is geared towards harmonious and peaceful living as human beings. The Constitution of India is the foundation. The Constitution of India, its preamble in special, is a treasure of principles and values that human life requires. It secures for its citizens liberty and freedom of thought, expression, belief, and worship. It also ensures social, economic, and political justice and security. It assures equality of status and of opportunity. It promotes fraternity that ensures dignity of the individual along with unity and integrity of the nation, which is a sovereign, socialist, secular, and democratic republic. The core values of the Constitution crisscross the universal values of all religions and secular traditions. They make sure the freedom, safety, and prosperity of all citizens and human beings as well. A global outlook called for. I believe all of us have traveled by flight several times. As we take off from the runway, the higher we go, the larger is the picture of the ground we get. The borders seem to disappear, and as we are able to see the entire city in one glance. And as we travel further, the earth appears to us as a single whole. This is the case in point for a global attitude to life and to achieving harmony in social life. We require rising from the local to the global. Well, in view of having the entire world in one single glance. The way to freedom. Rabindranath Tagore has a poem, Let My Country Awake. It reads, where the mind is held high and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert and dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. This is the way to freedom in the right sense of the word. A new way of looking at things. Henry Valentine Miller says, our destination is never a place. It's a way of looking at things. We have to stop thinking as individuals and start considering ourselves as a group or a collection. Well, to be specific, a family, a community, a nation, and a society. In other words, we should no longer think as I and me, but we and us. This is the beginning of a new way of thinking, which leads to social, economic, cultural, and spiritual harmony. This is the sign of growing up as human beings in the true sense. That indeed is our final as well as continual destination too. Taking the road not taken. Robert Lee Frost, an American poet of the 19th and 20th century, has a remarkable poem titled The Road Not Taken. It reads, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by.
And that has made all the difference. Thinking for oneself and thinking for the other are two roads in life. Vast majority of people choose to think for themselves. Well, they travel the road most people take. Only a small minority of people in the world choose to think for the other. But they travel the road less traveled by. And that road and taking the road not taken or less traveled by most people makes all the difference in the ultimate context. Freedom, safety, and prosperity for all is the outcome of thinking for the other. Well, taking the road less traveled by. Leave no one behind is the norm. Sustainable Development Goals 2030 of the United Nations has a landmark idea as its central spirit. Leave no one behind. More often than not, the human society follows a convenient logic called might is right. This is the motto of an autocratic model. Taking everyone into consideration and taking everyone along is the paradigm of a collective living. Such a paradigm considers the handicapped and disabled sections as well as the voiceless, the poor, and the other weaker sections. A preferential option, commitment and care for the lesser humans and those pushed to the margins outline the core spirit of leaving no one behind. Privatized or monopolized. They spill over the boundaries of caste, class, creed, culture, gender, language, ideology and nationality, and other social traditions. Values are a shared reality. They are gifts of the same Creator. They are the common cultural heritage of the human society too. They uphold the ethos and ethics of human life. They are tools for making a society that is harmonious and peaceful. Values are lighthouses. They are signals giving us direction, meaning and purpose in favor of social and economic harmony in life. Udar Charitanam, a vital mindset. Udar Charitanam makes Vasudhaiva Kutumbakam possible. In other words, Udar Charitanam is the ethics of Vasudhaiva Kutumbakam. The full quote goes thus: one is a relative, the other is stranger. Say the small-minded. Vasudhaiva Kutumbakam, live the magnanimous. Be detached, for magnanimous, lift up your mind and enjoy the fruit of divine freedom is the message. One has to cease to be low-minded, divisive and discriminative, which is symbolic of the diabolic spirit in the world. One has to keep traveling towards being good, noble, generous, upright and high-minded and thus humane in view of being magnanimous enough to make a family out of the world feasible as indicated by Vasudhaiva Kutumbakam. Lastly, Vasudhaiva Kutumbakam, the outcome. Vasudhaiva Kutumbakam is a concise Sanskrit phrase from Maha Upanishad, meaning the world is one family. Well, all the living beings on earth are a family. It's the most refined thought that can emerge from the human mind ever, divine as well as humane too. It's the biggest truth about life. It's a symbol of positive thinking. It's the most leading moral value on earth. Measures for tolerance, respect, acceptance, friendship, fellowship, collaboration, peaceful coexistence, consensus, harmony, peace, and the like are found on this way. Living like a family is the most balanced diet for the harmonious and peaceful living of the humans. In sum, Vasudhaiva Kutumbakam
is the best part of the human culture, characterized by social, economic, and spiritual harmony, along with freedom, safety, and prosperity for all. Thank you. Thank you so much, Dr. Thomas. Good evening, Excellencies, ladies and gentlemen, and all the honored guests and their organizers. I'm very grateful to have been called out here to give my opinion about what does social harmony and economic growth mean, and freedom, safety, and prosperity for all. All these words, ladies and gentlemen, are interconnected. They are related to each other. Growth in any form, be it amongst the humans, flora, fauna, environment, it requires full peace and harmony to get optimum results. Human history is replete with examples of growth in human civilizations. Ladies and gentlemen, this is certainly not a utopian thinking, but an undisputed piece of fact that all those societies which lived within the precincts of the ancient term of Vasudhaiva Kutumbakam, which we have been hearing just now, not only achieved exemplary advances in all aspects of daily living, but got into being the leaders in the growth of intellect, science, agriculture, architecture, arts, culture, trade, transport, and all fields of technical development, including commerce and industry, and not to forget the beautiful aspects of religion. We have so many examples from the ancient 16 kingdoms of our great country, especially from the south, with a prime example of Chola kingdom, or the kingdoms of present Tamil Nadu and Karnataka, where they were easily the most highly advanced territories in the fields of arts, culture, architecture, industries, shipping, trade, commerce, but they also dominated not only the entire South and Southeast Asian regions, but also territories in West Europe also, effectively creating their own territories controlled by ruling houses located on the Indian soil. The ruling houses does not mean ruled by military, they ruled by goodwill and good messages. The influence of these kings can still be seen in Bali, Java, Sumatra, Thailand, Malaysia, Indonesia, Korea. In fact, it is the entire area what we refer to now as Asia Pacific Zone. The cultural influence of Indian kings was so great that without forcing the people of these territories, major aspects of Hinduism was willingly and lovingly adopted by people of these kingdoms, which can still be seen in all aspects of their daily living, especially in the religious rituals. What we observe from this is that Indian kingdoms affected the countries around very positively, bringing in peace and harmony, prosperity, and tremendous growth in economy. All these were interconnected. The economic growth was so effective that right from within the region, which we refer to as now Asia Pacific region, along with India, the trade and commerce continued to spread to Europe and Middle East, which I do agree is a common knowledge now. It may come as a surprise to most of us that as I speak to you out here today, there is a team from South Korea which is in Delhi to study how to create a temple, Ram temple in South Korea. I am not propagating any religion, but this is a fact. The Korean team is out here. They are trying to meet the Prime Minister to build, through goodwill, Ram temple out there. And not only this, similarly, the Saudi royalty and rulers in the Middle East are allowing religious places, temples to grow and cultural centers to come up not by coercion and force, but by goodwill and harmonious feeling of oneness. What we observe from this is that Indian kingdoms affected the countries around very positively, bringing in peace and prosperity. This thus brings us our focus onto the region of Asia Pacific, which incidentally is in so much of
conversation nowadays. For the last 3 to 4 years, the region in question was mentioned some 6 times by the our Prime Minister Modi in his speeches recently in United States. This Asia Pacific zone can now also be referred to as Indo-Pacific, as was suggested by late Prime Minister of Japan, Shinzo Abe. He said that the South Asia and Southeast Asia countries around Indian Oceans and Indian Ocean region should be referred to as Asia Pacific zone. This zone, ladies and gentlemen, extends from Arabian Sea through Malacca Strait to Australia, Indonesia, South China Sea, connecting the small countries of the zone including China, Taiwan and on to Japan. All these countries, besides facing routine diplomatic differences of common nature, they are facing a gigantic problem of great proportions, which has created so much of disharmony in that area, and it is affecting their economic growth and development. These countries are living under constant threat of a very strong bully in the region, that is China, which has a very serious issue of sovereignty with Taiwan, where China considered as a runaway rogue state. So serious is the situation that there is a constant threat of war looming large. China practically is in a conflict with most of the nations on any of the reasons, whether it is from claiming of territories, whether it is to illegal occupation of islands, denying fishing and navigation rights, to even building of artificial islands and further militarizing them by building submarine pens, runways, missile bases for combat aircraft, etc. The current threat of the conflict prevailing in the zone is leading to a dangerous buildup of arms race. The aggressive behavior on the part of China in South China Sea is resulting in smaller countries not only losing their precious fishing and rich mineral territories, but also their legal trade routes. The reason for this is quite simple. As per the modest estimate, $3.8 trillion worth of global trade passes, that is 1/3 or more than 1/3 of the entire world trade passes through South China Sea every year. For China, this region has to be important because 80% of China's energy import and 40% of China's entire trade passes through South China Sea. And China has started laying claims on Spratly Island, Scarborough Shoal, various crucial points of Gulf of Tonkin. Countries like Taiwan, Philippines, Indonesia, Malaysia, Australia, Vietnam, Singapore, Brunei have started raising objections to the Chinese actions in the World Forum. The world reaction to the Chinese action is known to all of us. The Western world, United States and its NATO partners have called for the formation of Quad security group by America, Australia, India and Japan to counter the hegemonistic tendencies of China. The sum total of the entire situation is that entire Indo-Pacific, Asia-Pacific zone is in a complete disharmony, and atmosphere of counterproductive atmosphere has been created, and the economic growth is at its lowest ebb. The unhealthy atmosphere thus created is resulting in interference of countries from Western Europe, naturally because they want to save their trade and economy, and that is why interest of United States and European nations in this zone is not only there to protect their interest, but it is also starting an arms race, arms bazaar, which is again very detrimental to peace. Sir, Dr. A.K. Merchant is the National Trustee cum Secretary, Lotus Temple and Baha'i Community of India, General Secretary, the Temple of Understanding, India, NGO with consultative status at the United Nations. Sadhar Namaskar, Adabars, good day to all of you, and particularly to all the friends, dignitaries who are seated on the dais. Ladies and gentlemen and dear friends, I am also very grateful to Mr. Santosh Gaur, Mr. Janab Muhammad Ismail Sahab and ISMA Times for this very important gathering that they have
for the past several months, they have been working to bring us all together. I'm sure many more will join, but because the rains have started, the monsoon has begun. So friends, as far as the human race is concerned, my actually interest is in the rise and fall of civilizations. So when you look at the time frame of how a civilization reaches its zenith and then takes a decline, what are the causes? And how a civilization is born, progresses, and reaches to the apex of human prosperity and well-being. So this topic is truly very timely and important because the two big words, social harmony and economy, and within that giving a sub-theme of freedom, safety, and prosperity. Human beings are not lacking in wisdom and knowledge and intelligence. क्योंकि मानव जाति कोई इसमें बुद्धि की कोई कमी नहीं है, विवेक, जज्बा, क्षमता निर्माण, ये सारे हमारे पास है. लेकिन इसके बावजूद आज की जो परिस्थिति है, जो हमें एक ऐसे दहलीज पर पहुंचा दिया है, ऐसे करवट हमें लेने के बाध्य कर दिया है कि we are just 90 seconds from doomsday. You know, many of you know that when the atomic bombs were used, after that, a group of Nobel laureates, they came together and they set up a doomsday clock. And today we are just 90 seconds from doomsday. Just imagine, those of us who are older will remember that the Cuban Missile Crisis, the doomsday clock was about 12 or 13 minutes. When the Soviet Union broke up, they pushed the clock to 17 minutes to doomsday. And then progressively they realized that instead of moving towards peace, freedom, and prosperity for all, the world had become even more complicated and difficult to understand, more complex. So when the COVID, about 3 years ago, started, the pandemic, they had moved the doomsday clock to 120 seconds to midnight. And last year it was 100 seconds, and this year it has become 90 seconds. And once again, the security board of the Bulletin of Atomic Scientists have come together. That really is becoming very critical. The Secretary General himself, in his opening address to the General Assembly, where 193 member states of the United Nations listened, said we are living in the most perilous times. So the uncertainty, anischitta, has become so acute that we don't know what's going to happen in the next few minutes. But we, as people of goodwill, as sensible people, we've already heard some very interesting remarks, starting with His Excellency, the Ambassador of Lesotho. I, of course, have had the good privilege to be in South Africa and to travel to Swaziland, but didn't get a chance to go to Lesotho. It's a wonderful country. And we have a lot of people of goodwill and people with tremendous capacity and resources. But we aren't able to work together. So in order to address this, my good friend, Dr. Henry Thomas already mentioned Sustainable Development Goals. These were adopted in 2015 as a post-Millennium Development Goals, which was launched in the year 2000. And at the end of 15 years, only about 40% of the MDGs were achieved. And before the MDGs could be completed, 5 years prior to that, the process of dialogue and consultation among all stakeholders, governments, the United Nations and its very many agencies, the non-governmental organizations, the lay people, all of them participated in creating this document called Sustainable Development Goals, with its 17 goals, 169 targets, and 238 indicators. The fulfillment of these goals. These goals encompass every domain of human livelihoods, human existence.
whether it be the creatures deep down in the sea, in the oceans, or on the land, or in the air. Whether it be to do with hunger, poverty, education, gender justice, sustainable livelihoods, smart cities, all of that is encompassed. Shamil karna hai. We are all stakeholders. So when it comes to economy, anybody who wants to get the information knows that the whole world has a $100 trillion plus dollar GDP is 3.5 and a little more. We are the fifth largest or the fifth fastest growing. We just overtook the United Kingdom by 0.1% billion dollar. And there are, of course, the greatest GDP, which also has the greatest debt. I mean, if you were to understand what it implies to raise the debt ceiling of the United States of America's federal government, which has been raised now to something like $35 million for the next 2 years. On every one of the 340 million Americans, there is a debt on the forehead, 1000%. Today, Argentina, there are 125 countries which are not able to service the debts. You know, जो भी हम करते हैं अपने समृद्धि के लिए पैसा, क्योंकि पूंजी चाहिए. जैसे हमारे जब फाइनेंस मिनिस्टर ने फरवरी में बजट दिया, तो उन्होंने कहा कि इस साल हम 39 लाख करोड़ रुपया खर्चा करेंगे. 49 लाख करोड़ रुपीस. उसके लिए पैसा कहाँ है? तो उन्होंने फिर उसका ब्रेकअप दिया कि हमारे पास 40 लाख करोड़ रुपया तो इस जीएसटी से आएगा, एक्साइज में से आएगा, टैक्सेस में से आएगा, बहुत अलग अलग. लेकिन लगभग 9 से अधिक लाख करोड़ रुपया हमें कर्जे में लेना पड़ेगा बाहर से. तब जाके हम इस साल के लिए जो हमने योजना बनाई है वो हम पूरा कर पाएंगे. तो इस तरीके से आप हर नेशन का एनालिसिस कर सकते हैं. हमारे जो छोटे से देश लेसोथो, जहां पे आपने बताया कि खाली देयर इज अबाउट 2.4 मिलियन. इट्स अ स्मॉल कंट्री बट इट इज relatively prosperous and it is all the people are in good positions. But in most of the countries there is vast instability and inequalities. So it's a very complex issue about this prosperity. For Indians, our prosperity is largely anchored upon our value system, because we are one of the oldest civilization. And as a civilization, हमारा जो ये तमद्दुन है, ये सभ्यता, ये सबसे प्राचीन है. और इसके जो एथिकल और जो मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, इसके वजह से हम 140 करोड़ लोग एक दूसरे के साथ अधिकतर एक समझौता, एक प्रेम और मैत्री भावना के साथ हम जी पा रहे हैं. अगर हमारे भी 140 करोड़ की ख्वाहिशें जैसे विकसित देशों में है, अगर वैसा होता तो ये छोटा सा ग्रह के पास उतना साधन और सामग्री ही नहीं. और ये बात गांधी जी ने तो अपने जमाने में भी कह चुके थे कि the earth has enough for every human being's needs but not for anyone's greeds. और उनके जमाने में किसी ने कहा कि हमें अगर समृद्ध होना है तो जैसे अंग्रेज समृद्ध हुए हैं वैसा गांधी जी ने कहा कि अगर हम वैसा करना चाहेंगे तो ये ग्रह, ये जो पृथ्वी है, इतना साधन ये में मुहैया नहीं करा पाएगी, तो हम कैसे जी सकते हैं. तो हमारे में वो जो आध्यात्मिक गुण है, संतुष्टि की, मैत्री भाव, एक दूसरे के साथ जितनी भी कठिनाई हो, संघर्ष करना हो, हम एक दूसरे के साथ समझौता करके, एक दूसरे की सहायता करके हम अपने जीवन बिता रहे हैं. सो prosperity again has many dimensions. You can be very, very rich and wealthy, and yet you can feel that you are very poor. And the third important document, for which I am very indebted to Dr. Karan Singh and also the Temple of Understanding, is the promotion of UNESCO's education for the 21st century. If all the people of the world were to really subscribe to that, many governments, including India, have incorporated a large portion of that into our national education policy 2020.
And this document, which is titled Learning the Treasure Within, यानी सीखने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, हर मानव में जो छिपे हुए प्रतिभाएं, क्षमताएं, योग्यताएं और गुण हैं, उसको पहचानना और उसका उजागर करना। शिक्षा के क्षेत्र से हम यही काम करते हैं। तो उसमें उन्होंने जो 4 स्तंभ दिए हैं, उसको हम सही ढंग से अपने जीवन में उतारें और अपने समाज में, अपने परिवार में भी इसका प्रभाव हम ले आते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि बहुत हद तक हमारी जो समस्याएं हैं वो बड़े आसानी से हल हो सकता है। और वो 4 स्तंभ क्या है? समय मेरे पास कम है तो मैं बस यही बता के अपने वाणी को विराम दूंगा। द फर्स्ट पिलर ऑफ लर्निंग इज लर्निंग टू नो। सीखने की प्रक्रिया से हमें ज्ञान हम अर्जित करते हैं। सेकेंड पिलर इज लर्निंग टू डू। आज हम कौशल वृद्धि की बात करते हैं, स्किलिंग, क्षमता वृद्धि की बात करते हैं। सो द सेकेंड पिलर इज लर्निंग टू डू। आज हमारे देश में द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु आर ग्रेजुएट्स, but they are also the maximum number of people who are unemployed because their diplomas and their degrees have not made them capable enough to find employment. Though we have reached up to 65% of literacy in the country, it may be even more now, but a lot of them are only functionally literate. Unfortunately, in United States, the situation has got worsened. I was studying about the education system. As a result of the COVID, there is a greater amount of illiteracy, and the education system in the US has taken a back seat. Fortunately, in India, we tried to manage, and though we still have many schools where a class 6 student is unable to pass the test of class 2 because of the teacher incompetency, those challenges can be addressed. So the second was, skilling. Today, if a majority of the Indians, 65%, are below the age of 30 years, then we have a great opportunity for demographic dividends if we are properly educated and skilled. And India, by virtue of having a very strong, is having a population decline. And they need able-bodied, properly educated, capacity-oriented individuals. China is also going to face a very acute problem about the able-bodied workforce. Whatever may be the political scenario in the world, I'm not getting into that because it's a big subject in itself. And if we start analyzing, we can easily get trapped into us and them and this political ideology or that political ideology. My concern is the well-being, the welfare of every man, woman, youth and child, not only in India, but the whole world. So the second pillar was about skills. The third pillar was learning to be. If we are human beings, the best of all creation, do we qualify to be called a human being? If we behave the way every day the reports come towards girls and women, human beings implies masculine and feminine, and yet every day the cases of violence towards women and girls, because one of the things we do, one of our organizations, the Shanti Sahyog, we also deal with domestic violence, and we know how families are suffering, particularly women and girls. We also ensure that girls are empowered, because the two verticals for economy are the empowerment of women and girls and the education of children. Recently, the government put together a social index report, and they identified 3 verticals. And they have gone through all the 707 districts, though there are 740 districts, and all the 36 states and union territories. And they have got indicators, and the 3 verticals are basic human needs. What are the basic human needs? The second is, what are the foundations for the well-being of every human being? And the third is, what are the opportunities? And when you go through that report, you can easily make out whether it has to do with water, environment, education, health infrastructure,
or safety and freedom. There are many places in Delhi itself. I'm afraid to go there after sunset. The kind of violence that exists, either because there are people who are drug addicts, or people who are drunken, or people who want to just make a quick buck out of the weakness or the vulnerabilities of people living there. So the third pillar was learning to be. Can we be a good human being? And it has to do also with religion and spirituality. And the fourth pillar, which will truly ensure good prosperity and a better economy, is learning to live together. Any society where there is no unity, peace, and harmony will surely be always at a receiving end. So at the end of the day, when you look at this UNESCO document, and it's very wonderfully presented, all we have to do is to implement it in our lives, and you will see how it brings about a change. So the two systems of knowledge, one is the science and technology, and the other is religion and spirituality, dharma or spirituality. When both these systems are also having a healthy interface, then there will be prosperity, there will be real freedom, there will be economic growth. So friends, I know my time is limited, but उज्जवल और एक समृद्ध भविष्य के लिए हमें आगे बढ़ना है, और मैं ये एक प्रार्थना यूनिटी के लिए करना चाहता हूँ, क्योंकि मानव जाति की एकता में हमारा सुंदर भविष्य है. And I'll just say it in English. Oh my God, unite the hearts of thy servants and reveal to them thy great purpose. May they follow thy commandments and abide in thy law. Help them, O God, in their endeavor and grant them strength to serve thee. O God, leave them not to themselves, but guide their steps by the light of thy knowledge and cheer their hearts by thy love. Verily, thou art their helper and their Lord. This is the prayer we offer every day, apart from many other prayers. हम आज इस सब्जेक्ट पे बात करते हैं, मगर मुझे वेद का पहला मंत्र याद आता है कि बहुत साल पहले हमारे प्राचीन वेद में सबसे पहला मंत्र था समगच्छध्वं समवदध्वं समो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे समगणाना उपासते समगणाना उपासते. कि हम सब मिलकर रहें, प्यार से रहें, एक साथ चलें और एक साथ कार्य करें, पॉजिटिव थॉट्स हों, अच्छे प्रेम के साथ रहें. सेफ्टी का सबसे पहला नियम है कि जब तक हम आपस में प्रेम के साथ नहीं रहेंगे, सहयोग नहीं देंगे, तो हम अपने घर में भी सेफ नहीं है, बाहर भी सेफ नहीं है. दिस इज़ मेन इम्पोर्टेंट थिंग्स. सामाजिक सद्भावना क्या है? एक दूसरे से प्रेम ही तो है. जैसा कि आपने कहा कि स्पिरिचुअलिटी वेलबींग बहुत इम्पोर्टेंट है. स्पिरिचुअलिटी क्या सिखाती है? लिव विद ऑनेस्टी, काइंडनेस एंड ग्रेटिट्यूड आल्सो. कि हम एक दूसरे के साथ प्यार से हैं, सम्मान से हैं और मदद करते हैं, तो प्रोस्पेरिटी तो आ ही जाएगी. प्रोस्पेरिटी की ज़रूरत ही नहीं है. मुझे लगता है कि धन कमाना इतना ज़रूरी नहीं है, धन को खर्च करना वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. कि हाउ टू मैनेज, हाउ टू स्पेंड मनी. क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम भाग रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं. आप मुझे पूछोगे नहीं कि मैं कब आऊँ कब जाऊँ. दिस इज़ माई फ्रीडम, दिस इज़ माई इंडिविजुअलिटी, दिस इज़ माई जो भी है मेरा है. ये पापा ने 3 बार सुना. फिर पापा पूछता है कि बेटा इधर आओ. बोला क्या? बोले पापा बेटा आज के बाद मैं भी घर से जा रहा हूँ और मुझे कुछ सामान बेचना है, ये मकान वगैरह. कैसे पापा, हाउ कैन डू? मुझे भी बोलना मत कि आप टाइम से मिलना, घर पर बैठे मिलना. तो ये क्या फ्रीडम है? फ्रीडम होती विचारों की, थॉट्स की. वो भी फ्रीडम तब चाहिए जब आपका मेंटल लेवल ठीक है.
अगर हेल्थी नहीं है, मेंटल इलनेस है, तो हाउ कैन सर्वाइव? क्या फ्रीडम होगी वो? जैसा कि आपने कहा, वहाँ एंजाइटी, स्ट्रेस होगा, वहाँ अनसेफ होंगे हम। पहले अपने माइंड को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है, और माइंड को हेल्दी रखने के लिए स्पिरिचुअलिटी ज़रूरी है, क्योंकि आपको स्पिरिचुअलिटी सिखाती है कि हाउ टू लिव विद ऑनेस्टी, विद गुड थॉट्स एंड अपनी इनर ग्रोथ के लिए। वो हम कहते नहीं दिस इज ये ओल्ड है, ये है। मैं तो ये श्लोक बहुत साल पहले हमारे वेदास में लिखे हुए हैं। कितने साल पहले लिखे होंगे वेद? बहुत साल पहले। आज हम बात करते हैं, हम अपनी ही संस्कृति को भूल रहे। हम कहते हैं राष्ट्र को बहुत ऊंचा उठाना। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र है एक पूरा ऐसा स्पेस। उसके बाद क्या है? लैंड। उसके बाद क्या है? हम जिसमें रह रहे हैं, क्योंकि हमसे राष्ट्र है। और उसके बाद क्या है? हमारी विरासत, संस्कृति, संस्कार, जिसको जो हमारे पास ऑलरेडी है। और हम बात करते हैं कहीं और, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम बात करते हैं कि हमें ये करना है, हम ये से जिएंगे, हम ये करेंगे। बहुत अच्छा है प्रोस्पेरिटी के लिए इनोवेशन करना, बहुत अच्छा है अपनी जागरूकता के लिए कि आप आगे बढ़े। अगर हम इतना नहीं खोज करेंगे तो आज हम प्रोस्पेरिटी होती ही नहीं। हम फ्लाइट में नहीं उठते, हम इतना सब कुछ नहीं करते। वो अच्छा है, मगर एक एक्सेस के बाद इतना अच्छा भी नहीं कि हम अपने आप को भूल जाएं। हम वेलबींग के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत फोर्सफुली हम वो चीज़ें सिखा रहे जो ऑलरेडी हमारे पास है, हमारी संस्कृति में है। हमें सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। सबसे पहले हर घर में हमें हार्मनी रखनी होगी, हर माँ को जागरूक होना होगा, हर आसपास के पड़ोसी को जागरूक होना होगा कि वो आए दिन जितनी घटनाएं हैं, जितने आए दिन हमें परेशानियां होती हैं, वो किस वजह से? क्योंकि हम अवेयर नहीं है। अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी हमारी फ्रीडम भी ठीक है और तभी हमारी प्रोस्पेरिटी भी है। इंडिविजुअल आदमी इनहेरेंट चाहता है कि मैं फ्रीडम में रहूं, मेरे विचार फ्री हों, मैं जो करूँ वो फ्रीडम के साथ करूँ। इच्छा है, पर अच्छा होना चाहिए, समाज के लिए भी, घर के लिए भी और आसपास के लोगों के लिए। माइंड, जैसे आप जो भी बात करते हैं, आप देखते होंगे अक्सर आसपास में, मैं जो भी बात करते होंगे, कई लोग सुनकर भी नहीं सुनते होंगे, रिकग्नाइज नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं, जिद्दी हो जाते हैं। मगर उनको कौन समझाए? कैसे उनकी फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आए? कैसे उनको बताए कि आप शायद कहीं ना कहीं अपने माइंड को भूल रहे हो? अवेयरनेस नहीं है, एक पॉजिटिविटी नहीं है। क्योंकि आपको मैं बात करती रहूं और आप सुनते रहें तो वो भी ठीक नहीं है। एक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। वो स्पिरिचुअलिटी करते थे हम, उसमें ब्लेस्ड माइंड। ब्लेस्ड माइंड क्या होता? आप सबकी बात सुनिए, प्यार से रहिए। आप सुन के अपने रिएक्ट कर सकते हो, मगर बगैर सुने चुपचाप सुनते रहे और आराम से देखते रहे, अवेयरनेस नहीं हुई तो भी सुनना नहीं है। My name is Dr. Irima Irani. I'm belonging to Iran, but mostly from 20 years I am here. और मैंने बहुत सारी यहाँ रह के लैंग्वेज सीखी है, मगर आज मेरा ये दिल ये चाह रहा है कि मैं इंग्लिश में नहीं बोल के हिंदी में बोलूँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे एक हैदराबाद से हमारे दोस्त आए हुए हैं, डॉक्टर अल्ताफ़ साहब, और एक सुभाष गौर साहब बैठे हैं पीछे, वो गांधीनगर से आए हैं। बहुत सारे दोस्त हमारे आए हैं। तो स्पेशली तो मैं ये कहूँगी कि मैंने 2019 में ज्वाइन किया था इसमा टाइम्स को। तो बहुत ज़्यादा नहीं बोल के मैं 2-3 मिनट में अपनी बात को ख़त्म करूँगी कि आज जो मैं ये सारा बैनर जो देख रही हूँ और इसमें जो इंक्रीज़ हुई है जो चीज़ें, और वो वर्ड है इंटरनेशनल। आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी, सो हैप्पी। बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं संतोष सुभाष गौरसारी, वो नाम थोड़ा सा वो हो जाता है, अगर आप सुन रहे हैं तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। और मोहम्मद इस्माइल साहब हैं, और मैं बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं जानती, लेकिन हाँ एक बात ये ज़रूर है कि मैं जो काम कर रही, बिकॉज मैं भी सोशल वर्क से जुड़ी भी हूँ, मैं प्रेस में भी हूँ
और बहुत सारे काम हैं, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहती। तो इसमें जो 3 चीज़ें वो लिखी हुई थी, जैसे अभी सर ने भी कहा, फ्रीडम, सेफ्टी और प्रॉस्पेरिटी। ये 3 चीज़ों की हर जगह मजबूती जब तक नहीं होगी, वो तब तक हम लोग ऐसे ही रहेंगे जैसे मतलब वो पौधे से फूल बिखर जाते हैं ना, फूल टूटते हैं, नीचे गिर जाते हैं तो वो फैल जाते हैं, तो इस तरह हम लोग हो जाएंगे। क्योंकि आई लव इंडिया वेरी मच वेरी मच वेरी मच, बिकॉज माई फादर केम हियर टू सेलिंग द ईरानी हॉर्सेस and he liked India very much, and he, after dying in the death of the bed, he taken a promise to me that you will not go to Iran, you will live here and we will do the social service. So I'm so happy कि अभी जो भी सर ने भी बताया और वो सिस्टर भी बोल कर गए हैं, बहुत अच्छी स्पीच थी उन्होंने भी, और भी जो सर बैठे हैं और हमारे जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया है, वो देयर 2 पर्सन इज मिस्टर ताजुद्दीन अंसारी साहब और डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब। तो इन लोगों ने बहुत इंस्पायर किया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बोलना नहीं आता था, मैं बोलने से बहुत डरती थी, लेकिन इन लोगों ने मुझे बहुत हिम्मत दी। और आज तक, और मैं जो सोचती हूँ कि आज मेरे पास जो इतनी पोस्ट है कि मैं नेशनल ह्यूमन राइट की चेयरपर्सन हूँ, नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ मदर टेरेसा फाउंडेशन की, और प्रेस में हूँ, और भी बहुत सारे, ये सारा जो है वो डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी साहब को इसका श्रेय जाता है। क्योंकि इन्होंने, बस मैं इतना कहूँगी कि इन्होंने एक छोटे बच्चे की तरह मुझे उंगली पकड़ कर चलाया और मुझे बहुत इंस्पायर किया। और मैं बहुत ज़्यादा वक्त आप लोग का नहीं लेना चाहूँगी, और एक बार फिर मैं संतोष गौर साहब की और मोहम्मद इस्माइल साहब की, जिनका नाम जानती हूँ मैं, आफ्टर थैंकिंग टू अल्लाह, हम उन लोगों को भी थैंक्स करते हैं। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। Namaskar. I, on behalf of Global Trade and Technology Council of India, would like to thank and welcome everyone who is presented here. It is a good theme of World Conference on Social Harmony. Commission Delhi and leader, social activist. May I request Dr. Tajuddin Ansari. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब। तो अश्क छिपाने का सलीका नहीं जिनको, 100 ज़ख्म छिपाने की अदा मांग रहे हैं। मांगी है न मांगेंगे कभी भी करम की, हम अपनी वफाओं का सिला मांग रहे हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और तमाम स्टेज पर बैठे हुए गेस्ट, पहली बात तो नाउम्मीदी का नाम कुफ्र है। हम लोग नाउम्मीद नहीं हैं। हमारे महापुरुषों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे नबियों ने, हमारे देवताओं ने हमें एक ही पाठ पढ़ाया कि ये पूरा आलम, पूरी दुनिया, सब एक समान है, सब एक ईश्वर के बनाए हुए हैं, सब एक अल्लाह के बनाए हुए हैं। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं। पूरी दुनिया तो हमने देखी भी नहीं है, पढ़ाई है इतिहास में, कुछ पढ़ा कुछ नहीं भी पढ़ा। खैर, 2 चीज़ें मैंने ज़रूर पढ़ी कि पूरी दुनिया का बनाने वाला रब है, अल्लाह है, और हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है। पूरी दुनिया के लिए रहमत बन के आए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए रहमत बन के आए। इसी तरीके से हमारे तमाम महापुरुष, देखिए जनाब पुरुषोत्तम राम जी के दिए, देखिए कि उन्होंने अपने बाप की आज्ञा मान के 14 साल का वनवास काटा, उससे हमें हिदायत लेनी चाहिए। और आज हम अपने बाप की बात नहीं मानते, घर में अपने माँ और बाप की नहीं मानते। लेकिन मैं फिर भी एक बात कहना चाहता हूँ आप तमाम लोगों से, जो मैंने देखा और सीखा है कि अपने बुज़ुर्गों का अदब करो, बच्चों पे रहम करो। और 3 चीज़ें मैंने पढ़ी। एक तो जो हमारे यतीम बच्चे हैं, जिनका कमाने वाला नहीं है, बाप जिनका मर गया, डेथ हो गई, अब उस बच्चे को कौन परवरिश करेगा? वो छोटा बच्चा अगर स्कूल में नहीं जाएगा पढ़ने के लिए तो वो तो गलत कामों में बिगड़ेगा। तो तमाम समाज के लोग, तमाम मज़हब के लोग उन यतीम बच्चों को, अपने पड़ोस का किसी भी मज़हब व मिल्लत का हो,
उस बच्चे की तालीम की तरफ ध्यान दें। दूसरी बात, जो विधवा औरत है जिसके शोहर की डेथ हो गई, वो किसी भी मजहब व मिल्लत का हो, कोई भी हो, उस औरत की मदद की जाए, ताकि सगे भाई को भी मैंने देखा है कि वो अपनी बहन की मदद नहीं करता जो बेवा हो जाती है। तीसरी बात, एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है आज की तारीख में कि माँ बाप भी मोबाइल पे लगे हुए और छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल पे लगे हुए। ये इतना बड़ा जहर है कि पूरी उम्मत को, नस्ल को मिटा के रख देगा। अगर आपने अपने बच्चों को इस मोबाइल के कहर से नहीं बचाया तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। असल चीज़ ये भी ज़िंदगी की है। और एक हमारे समाज में, हिंदू मुसलमानों में, जो हमारी बेटियां हैं जिनकी उम्र 30-30 साल की हो गई, उनके हम लोग शादी नहीं करते। दहेज की वजह से इस लानत को ख़त्म करो। ये असल ज़िंदगी की बात जो मैंने देखी। मैं इन 3 चीज़ों पे काम करता हूँ। मैंने देखा कि जब बच्चियों की उम्र 30 साल की, 28 साल की, अरे भाई दहेज ना दो, निकाह को आसान करो, ज़िना को मुश्किल कर दो, क्या ज़रूरत है दहेज देने की। तो ये 3 चीज़ें हम लोगों को आनी है। और ये कब आएंगी? जब हमारे पास तालीम आएगी। असल ज़िंदगी है तालीम। जैसे इस्लाम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी को सबसे पहले इकरा की बात की गई। इकरा माने पढ़ने की, लिखने की बात की गई। तो तमाम मुसलमानों को एक पैगाम दिया कि आप पढ़ो। का एक जाहिल, और दूसरी 2 कौमें और हैं, एक अमीर और एक गरीब। पैसे वाले को कोई उसकी जात से नहीं जवाब देता। बाकी ये सब चीज़ें जहालत हैं। इन चीज़ों को छोड़िए। और रही सामाजिक बात, सरकारों की बात है, सरकारें आती जाती रहेंगी, सरकारें खुद कुछ नहीं करेंगी। हमें खुद को करना है। हमें ये देखना है कि मेरा पड़ोसी राम सिंह अगर है, उसके बच्चों ने रोटी नहीं खाई, तो ताजुद्दीन के बच्चों ने अगर खा ली तो वो भी खाना हराम है, जब तक राम सिंह के बच्चे खाना ना खा लें। ये पैगाम आपके अंदर आना चाहिए, ये दिलों में मोहब्बतें आनी चाहिए। जब तक आप राम सिंह और ताजुद्दीन और मोहम्मद और फलाह इसके नाम की सियासत करते रहेंगे, इससे कोई फ़ायदा ना समाज का होगा, ना सरकारों का होगा, ना किसी का फ़ायदा होगा। फ़ायदा होगा एक यतीम बच्चा, किसी भी मज़हब व मिल्लत का हो। आप बहुत कुछ कमाते हैं, 2000 रुपये खाने पे बैठ के होटल पे खाना खा लेते हैं, 2000 रुपये उसकी तालीम पर खर्च कर दो। एक जो विधवा औरत है जिसके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उसको कोई नहीं कबूल लिया, अरे भाई 2000 रुपये उसकी पेंशन बना दो। मैं तो आप सबसे एक दरख्वास्त करने के लिए यहाँ हाजिर हुआ हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर मेरा ख्याल तकरीबन 3 लाख मस्जिदें हैं, और मंदिरों की तादाद तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ 12 लाख से ऊपर मंदिर हैं। आप मुझे बताओ, अगर एक एक मंदिर एक एक यतीम बच्चे को गोद में उठा ले, एक एक मस्जिद वाले कमेटी बना के एक एक बच्चे को उठा ले, तो कितने बच्चे हमारे यतीम पड़ जाएंगे और हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बड़ा हो जाएगा। ये असल इबादत है। अल्लाह के बंदों से प्यार करना ये असल इबादत है। और सारी दुनिया के अंदर खुदा ने इस सृष्टि को बनाया, इसलिए नहीं बनाया था कि हम इस तरह की बातें ज़मीन पे फसाद पैदा करें, बल्कि ज़मीन पे मोहब्बत की बात करें, इत्तफाक की बात करें। और जब हम मोहब्बत की बात करेंगे, मैं आयुर्वेद आचार्य हूँ, मैंने संस्कृत पढ़ी है, 1976 के बैच का डॉक्टर हूँ। तो मैंने तो नहीं देखा कि भाई खून में किसी से पूछा जाए कि ये मुसलमान का खून हिंदू क्यों चढ़ा रहे हो, ये तो मैंने देखा नहीं। ये तो आप लोग कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान, मैंने तो नहीं देखा। मैं तो ऋषिकुल में पढ़ा हूँ, मैं तो गंगा जी में 5 साल तक नहाया हूँ, मुझे तो किसी ने नहीं रोका कि आप क्यों नहा रहे हो। मैं तो उस हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ 1972 में ज्वालापुर कनखल में एक धर्मशाला है, रुइया धर्मशाला, उसमें मुस्लिम को अलाउड नहीं था। तो मैं आपको सच्चा वाकया बता रहा हूँ, 60 बच्चे थे पढ़ने वाले, तो मैं अकेला मुसलमान था, 59 बच्चे गैर मुस्लिम थे। उन्होंने सब ने अपने बिस्तर निकाल के बाहर कर दिए, जब तक ताजुद्दीन अहमद नहीं जाएगा हम भी नहीं जाएंगे।
वह हिंदुस्तान कहाँ है? आज भी हमारे ताल्लुक वो 1972 से जो साथ पढ़ते थे, चाहे वो त्यागी हैं या राजपूत हैं, जिनके बच्चे अमेरिका चले गए, मेरा भी अमेरिका चला गया, लेकिन आज भी हम उसी मोहब्बत से मिलते हैं, उसी मोहब्बत से बात करते हैं। नफ़रतों की बात मिटाओ, मोहब्बत से रहो और अल्लाह सबको देगा। पालने वाला एक है, आप नहीं पाल सकते, मैं नहीं पाल सकता, वो ईश्वर जो बैठा है वो सबको पालता है। ये यकीन हमारा कामिल होना चाहिए। और मनुष्य की बात जहाँ तक मेरे एक अजीज़ ने कहा था, तो मनुष्य की इच्छाएं बेअंत हैं। ये प्रोफेसर मार्शल की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। मनुष्य की इच्छाएं बेअंत हैं, उनको पूरा करने के सीमित साधन हैं, परंतु पूरा नहीं कर पाता, मर जाता है। तो मौत तो तुम्हारे हाथ में नहीं है। अरे ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, कितने लोग मर गए? जंगें हो गई, कितने लोग मर गए? जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। इज्जत और जिल्लत तो खुदा के हाथ में है। रोजी रोटी अल्लाह के हाथ में, इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। इंसान के हाथ में है कर्म करना। आप कर्म करो, देगा तो ईश्वर आपको। मैंने देखा है, क्योंकि मेरे बच्चे भी बिजनेस करते हैं, तो मैंने देखा बहुत करीब से कि जो कुदरत ने नसीब में लिखा है ना, आप मिट्टी में हाथ डालोगे वो सोना बन जाएगा। और हिंदुस्तान की तो एक हिस्ट्री, एक इतिहास है कि अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, और वोट की ताकत से राजा पैदा होगा। मैं आपको ये बात बताने आया हूँ, तो वोट की ताकत को पहचानो, किसको करना है वो आप जानो, आप समझो, अच्छा बुरा आप समझो, लेकिन एक बात ज़रूर पल्ले से बांध लो कि जब तक आप नफ़रतें नहीं मिटाओगे, मोहब्बत का पैगाम नहीं दोगे, आप कामयाब नहीं हो सकते। मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, पूरे आलम की बात कर रहा हूँ। कुरान कह रहा है, कुरान में डेफिनेशन दी है खुदा की परिभाषा कि अल्लाह किसे कहते हैं, भगवान किसे कहते हैं, ईश्वर किसे कहते हैं, किसकी पूजा करनी चाहिए। तो कुरान की एक आयत है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह एक है, वही पूजनीय है, उसी की पूजा करो। और कौन है वो? उसकी कोई औलाद नहीं है, उसके कोई माँ बाप नहीं है, उसकी कोई बीवी नहीं है, उसके बच्चे नहीं है। वो एक ताकत है, वो ईश्वर है जो सबको पालता है, सबको देता है। ज़िंदगी वही देता है, मौत भी वही देता है। तो हमारा ये यकीन होना चाहिए। बाकी तो भीगे हुए परों से परवास करके देख, भीगे हुए परों से परवास करके देख, अंजाम उसके हाथ है, आगाज करके देख। ये कैंचियाँ क्या मेरे पर काट डालेंगी, ये कैंचियाँ क्या मेरे पर काट डालेंगी, मैं परों से नहीं हौसलों से उड़ता हूँ। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया कि जो आज बर्ड कॉन्फ्रेंस सोशल हार्मनी पर रखा गया है। मैं इस्तकबाल करता हूँ इस्माइल साहब का, आरिफ साहब का। इस तरह के प्रोग्राम हम सब लोगों को ये सीख कर जाना है कि हम लोग घर जाकर अपने मोहल्ले में, अपने पड़ोस में यही सीख कर जाएं कि हम लोग एक प्यार जोड़ने का काम करें। बहुत सारे झूठे और फर्जी हिंदू मुस्लिम को तोड़ने के लिए प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। ऐसा है नहीं। आज भी इस देश में भाईचारा है। हम लोग बीच में रह के, हिंदू मुस्लिम एक रह के इस देश की ताकत बन सकते हैं। जो देश में जब देश आज़ाद हुआ तब ये इस हिंदू मुस्लिम नहीं था। क्यों? एकता थी, यूनिटी थी। हमारे देश में रामचंद्र बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रानी झांसी, महात्मा गांधी, बहुत सारे महापुरुष हुए कि हमारे देश में एकता के प्रतीक बने, एक भाईचारा बना।
हमारे देश में हम लोगों को चाहिए एक यूनिटी कायम करना, और एक पार्टी विशेष के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि हमें खुद देखना है कि अपना वोट बैंक किसको हमें चुन के लाना है, जो हमारे देश के लिए काम करे, जो नफरत की राजनीति ना करे। हम ये चाहते हैं हिंदुस्तान में भाईचारा बढ़े। जो देश के अंदर कुछ चंद लोग जो अपनी सियासत के लिए, अपने वोट बैंक के लिए एक तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमें उससे लड़ना है। हमारे अंदर इस चीज के लिए खुद ये बात पैदा नहीं होगी कि हेल्प टू सेल्फ, अपनी मदद खुद करिए। तो अब आज हैं, मैं बचपन से 50 साल की मेरी एज हो गई, मुझे मेरे माँ बाप और मेरे बुजुर्ग कहते आए कि हम 32 करोड़ हैं, बचपन से सुनता आ रहा हूं। तो अब तो हम होने चाहिए 52 करोड़। चलिए उसको फॉरगेट करिए, हम 18 करोड़ हैं। ना 18 करोड़ हम पाकिस्तान जा सकते, ना हम बांग्लादेश जा सकते, और ना ही हम कोई दूसरा मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अब बना सकते। तो जब हमें हिंदुस्तान में ही रहना है तो राजनीतिक पार्टियों को ये सीखना और सोचना पड़ेगा कि मुसलमानों को मुख्य धारा में रखना ही पड़ेगा। तो फिर उनको क्या जरूरत है कि इन सब चीजों के चक्कर में पड़ते हैं। हमारा तो यही नारा है कि जब हमें एक साथ यहाँ रहना है, तमाम सब चीजें मामला, तो इन चीजों के मुद्दे क्यों उठते हैं। जिस जंग का अंजाम सुलह हो कि हम सारा दिन लड़े और शाम को बैठ के फिर थानों में बैठ के हम फैसले करते हैं, तो जिस जंग का अंजाम सुलह हो तो उस जंग को नहीं करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। Give token of recognition to Guru Mahacharya Anita. तो मैम जी, इस तरह के जो प्रोग्राम हैं जो सोशल हार्मोनी को लेके आज यहाँ पर हुए, तो इस तरह के प्रोग्राम अवेयरनेस के लिए और होने चाहिए। तो इस तरह क्या कहना चाहेंगी आप इस तरह के प्रोग्रामों के लिए? मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जो यहाँ पे हुआ है बहुत अच्छा है। जो सब कंटिन्यू बोलते जा रहे थे और अपनी अपनी स्पीच दे रहे थे, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगता है। ऐसी बात नहीं, अगर हम एक जगह एक ही मिलकर रहेंगे तो शायद बस जी यही है कि हम सब मिलकर रहें और साथ रहें, और तभी सबका साथ सबका विकास वाली बात होगी। लेकिन इस तरह के जो अवेयरनेस प्रोग्राम है ये बहुत कम हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा होने चाहिए। यही हमारी सबसे पहले कंटिन्यू चल
चलता रहे तो बहुत अच्छा भी लगेगा और आगे सोचने समझने के लिए काफ़ी चीज़ें होंगी और छोटी छोटी चीज़ों से ही हम लोगों को सीखने को मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी, थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ आए।